Yes, dear students, you are welcome in the commerce classes. Today we will discuss next chapter, that is depreciation. First of all, let's learn the meaning of depreciation. This depreciation actually is the decrease in the quality, quantity and the value of assets, or generally we can say the decrease in the value, the decrease in the quantity, quality or the value. That's called depreciation. This depreciation word, it is derived from a Latin word deprecium, where de means decline and pretium means price. That is decrease in the value of price, or we can say depreciation means decline in the value of price of the assets or in the value of the assets directly. Decrease in the value of assets. This is the permanent decrease in the value of assets because of the use or due to lapse of time. जब किसी चीज़ को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, सही है कि नहीं? और आप उसको सेकंड हैंड नाम भी देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक कार है, ठीक है, तो उसका वैल्यू उस वक्त 10 लाख था जब आपने उसको खरीदा. आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 इयर्स आपने यूज़ किया, 1 साल की, तो यूज़ करते करते उसका वैल्यू घट गया. तो क्या आपको कोई देगा 10 लाख बराबर, जिसको कंपनी में भी वही गाड़ी 10 लाख में मिलेगी, क्या आपको वो देगा पुरानी गाड़ी को 10 लाख जो आपने 1 साल यूज की है? दैट मीन्स दिस वैल्यू डिक्लाइन्स ड्यू टू यूज. दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो उसके बाद हमें ज्यादा क्लियर ये होगा जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. इसका डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका डेप्रिसिएशन का, दैट इज इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश एक्सपेंस यानी कि हम 10 लाख की गाड़ी 8 लाख में ही लेते हैं. इसका मतलब है जो 2 लाख हम नहीं देते हैं, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस. ये हमें ऑटोमेटिकली इसका जब वैल्यू गिर जाता है तो हम ये 10 लाख में से हमें 2 लाख बच जाते हैं, बचत होती है. ठीक है, दिस डेप्रिसिएशन में बी फिजिकल और फंक्शनल. ठीक है, ये फिजिकल भी है और फंक्शनल भी है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एसेट है, ज्यादातर ये फिक्स्ड एसेट्स में होता है. क्या होता है? हाँ, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये फिजिकल है. दूसरा है फंक्शनल, यानी चलती गाड़ी, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो डेली. तो ये दोनों फिजिकल और फंक्शनल, इन दोनों में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकती है? ज्यादातर ये फिक्स्ड एसेट्स में. हाँ, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनली. लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में एक चीज पर नहीं, दैट इज लैंड. तो हम लिख सकते हैं कि ये कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. लैंड के बगैर, क्योंकि लैंड को डे बाय डे रेट चढ़ती रहती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है. फिक्स्ड एसेट्स में लैंड वो एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज नहीं होती है. दैट इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दिस इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. एंड नंबर 3, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओनली. वो तो मैंने आपको बोला पहले ही, तो अगर हम डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है तो किन एसेट्स पर हम करेंगे? ओनली ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स पर नहीं. डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट. अगर वैल्यू कम होता है, वो बुक वैल्यू होता है एसेट का, न कि मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू बराबर है इसका. ठीक है, डेप्रिसिएशन वंस चार्ज्ड कैन नॉट बी रिकूप्ड आफ्टरवर्ड्स. एक बार तो चढ़ाया, डबल नहीं चढ़ेगा या कैंसिल भी नहीं होगा. ठीक है, रिपीट भी नहीं होगा. Depreciation does not depend on the fluctuations in the market value of an asset.
دیکھیے مارکیٹ ویلیو میں چینج آتی ہے, فلیکچویشنز مینس چینج, ٹھیک ہے, تو ان چینجز پر اس کے ڈیپینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈیپریسیشن آپ کے آئٹم پر جو آپ کے پاس ایسٹ ہے اس پر ڈیپریسیشن ہوگی, چاہے مارکیٹ ویلیو کم ہوگی یا زیادہ ہوگی, لیکن آپ کے ایسٹ کا جس پر ڈیپریسیشن چارج ہونی ہے تو اس کا ہمیں پہلے دیکھنا ہے اس کا ویلیو کیا ہے, اس کا اپنا ویلیو کیا ہے, اس کی ریٹ اس وقت کیا تھا, ایک سال پہلے کیا تھا, اب ایک سال کے بعد جب آپ نے یوز کیا اس کو, اب اس کو کتنا کم ہو جائے گا ویلیو. مارکیٹ ویلیو پر یہ ڈیپینڈ, وہاں چینج ہوگی, انکریز ہوگی, ڈیکریز ہوگی, دیٹ از ڈیپینڈ. تو lastly we can say depreciation is a gradual and continuous process because value of assets is reduced. دیکھیے یہ تو پروسیس چلتی رہے گی, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور گریجول کی ہے, یہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں, اپنے ٹائم پر, ٹھیک ہے. یہ اپنے جب اپنا ٹائم ہوگا, ایک سال ہوگا یا 2 سال کے بعد, اگر آپ اینول ڈیپریسیشن دیکھیے, ہاں اینول ڈیپریسیشن, اگر آپ کے پاس ایسٹ ہے, 5 سال ہوئے ہیں آپ کی گاڑی کو آپ کے پاس, پھر ہم اینول ڈیپریسیشن دیکھتے ہیں, یہ دھیرے دھیرے گریجولی ہمیں اس پر چارج کرنی ہے. پہلے سال کتنا, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال اور 5ویں سال. فار ایگزامپل آپ پہلے سال 2% اس کو ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں, دوسرے سال 3%, پھر 4%, پھر 5%, اسی طرح یہ گریجولی اور کنٹینیوس پروسیس ہے ڈیپریسیشن. تو اب ہم یہ اتنا سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈیپریسیشن جو ہے اٹ از دا فال ان دا ویلیو آف ایسٹس, اٹ از دا ڈیکریز اور ڈکلائن ان دا quantity, quality or the value, okay, خاص کر fixed assets. I think this much is enough for today. We will learn importance of depreciation in the next lecture. Thank you.